क्या आपको भी लगता है कि आप एक लूप में कन्वर्ट हो चुके हो? लाइक फॉर एग्जांपल, मैं सुबह उठती हूँ, नहाती हूँ, सब कुछ पूजा वूजा करती हूँ, देन ऑफिस जाती हूँ. Sometimes I go office, sometimes I not. It depends. But yeah, whenever I used to go office, then I work hard, then I do my work, eat some कुछ करते हैं, then again come back home, just do some household work, and then just sleep or either to make video. This is the exact loop I'm following since very long, and I don't know why. But आई थिंक कि सबके साथ हो रहा है अभी, क्योंकि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वट दे आर गोना हेड इट टुवर्ड्स देयर लाइफ, बिकॉज आई थिंक वी ऑल आर स्टक इन द एज. ईदर यू कैन टॉक अबाउट आर एज, ईदर यू कैन टॉक अबाउट आर इंटरेस्ट, बिकॉज आई थिंक आज के टाइम में जो एक जनरेशन है आफ्टर 96 या 95 वाला देख लो टिल 2000, दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट, struggling in terms of getting work on their relationship. Yes, because they don't know who is the right life partner first. Second, if they are not married, then they are struggling to having a right kind of people in their life to have the good conversation to discuss about career, partners, something like this, right? And even some people are in the same age but they are looking out for situationship, hookups and time pass, because they don't want to commit anyone, because they're scared of being heartbroken or something like that. But this is something. And apart from this, there are few people like me who want to cover themselves in a shell that they don't want to be in no drama, no fights, no conversation, no communication. Just be yourself, do whatever you want to do. Either you want to go for a trip, either you want to go for a work, whatever you want to do, just do it. मुझे ऐसा लगता है कि हम जो ये 5 साल की एज वाला जो है ना, 1995 से 2000 वाले, ये 4 कैटेगरी में ना डिवाइड हो गए हैं. और कुछ लोग, मतलब मेरी तरह कुछ जो लोग होंगे जिनको ये नहीं पसंद आ रहा होगा व्हाट इज सिचुएशनशिप, व्हाट इज हुकअप, व्हाट इज दिस, बिकॉज वी एज ए ह्यूमन कंसिडर टू बी अ लव, एंड लव कैन बी ओनली कम विद द कमिटमेंट, ट्रस्ट एंड एवरीथिंग. सो आज के टाइम जो चीज़ नहीं है आप उस पर इग्नोर नहीं कर सकते. But ठीक है, this is actually the life is. Don't know. So let me know to whom phase you are heading up.